Hello everyone, this is Chandan and you are watching the learning field. So in this video, we are also going to discuss a very important topic of numerical analysis, or you can say numerical methods. In the previous one or two videos, I already discussed some important topics like the convergence of rate of convergence of iterative methods, then the iteration matrix and the convergence of iteration matrix, these types of things. And here in this video, we will discuss the Runge-Kutta method, that is the RK method of order 2, or also some books it says that explicit RK method. Okay, so what is the application of this? And you can question me that, sir, how can we read this or why we read this topic? Okay, so I'll just answer this question, that this concept, okay, the explicit RK method or the second order RK method concept is very useful for CSIR NET exam and also GATE exam. See, you see sometimes the questions like this in the CSIR NET exam. Suppose you have given that yn plus 1, suppose you are given that let the RK method is this one, where k1 equal to this, k2 equal to this, then the approximate solution of y dash equal to this, then there are 4 options you have given and you have to find the correct options or options. And in GATE exam also these types of questions already asked in the paper. So what is the concept behind these types of questions? That is the ordinary differential equations, IVP, that is the initial value problem. So how can we solve the initial value problems of ordinary differential equation numerically? And the methods like Euler's method, then RK-2 methods, then we already trapezoidal rules, these types of rules we already solved in the differentiation and new integration chapter of numerical analysis or numerical methods. Okay, so see what is the concept behind these types of questions or explicit RK method of second order. There are 3 types of problems, 3 types of methods, and when and how or why we apply these 3 methods and apply these 3 methods, which questions we apply which method, you should clear in this video. In this single video you will obviously clear these 3 things, that how can we solve these types of questions. And in GATE exam also sometimes we can't understand the concept behind the questions from these types of questions of numerical analysis. Okay, तो देखो इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. So let's start, and before starting I am requesting you to all those who are new in my channel, please give a like to this video, share with your friends, and don't forget to subscribe the channel. Okay, and more you just subscribe the channel, share with your friends, so that we can achieve 10k subscriber as soon as possible. Okay, now the RK method. Okay, so I'll just write here. So I also refer you one book for this topic. You can also check from the book. Okay, so now the second order RK method. What? Second order RK method, that is the Runge-Kutta method. What is the method? We can write that yi plus 1 or yn plus 1 equal to yi plus w1 k1 plus w2. Very you must see this lecture till the end. This is very important video, very important for GATE and CSIR NET and any other higher math aspirants, okay, or exams. तो देखो w2 k2, ठीक है, and then with k1 equal to h f of xi yi and k2 equal to h f of xi plus suppose alpha h yi plus beta k, and the differential equation is y dash equal to f of xy and y of x0 equal to y0. This is the differential equation you have to solve by using these types of methods. Okay, where I equal to 0 1 and so on. देखो यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे टेलर सीरीज मेथड. अप्लाई Taylor series, but I am not going to brief this Taylor series here. If you see this proof, then you should see this book. I'll refer you the book. The book is Numerical Methods
for scientific and engineering computing, M.K. Jain, S.R.K. Iyengar and R.K. Jain. This is very famous book. So यहाँ पे देखो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 441 पेज, ठीक है। तो देखो एक्सप्लिसिट आरके मेथड ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं, एंड यहाँ से आपका जो है पूरा के पूरा टेलर सीरीज अप्लाई करके कैसे ये आया है यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो मैंने वो नहीं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। आई विल जस्ट से हियर द इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम। सी देन वी ऑब्टेन अप्लाई टेलर सीरीज मेथड, क्या कहेगा यहाँ पर W1 plus W2 this is equal to 1, alpha W2 this is equal to half, and beta W2 this is equal to half. These three things are very important. Now this is a system of equation, okay. The solution is what is the solution? Alpha equal to beta, ठीक है, W2 equal to 1 by 2 alpha and W1 equal to 1 minus 1 by 2 alpha. See, when these types of questions comes in CSIR NET exam, we just check that alpha W2 equal to half, beta W2 equal to half and W1 plus W2 equal to 1. We check these three things. But why we check these three things and how? Because there are three methods included in this concept, okay. There are three methods included. So that's why I discuss it here. तो देखो यहाँ पे दिस इज ए फ्री अल्फा, क्या है अल्फा यहाँ पर एक फ्री पैरामीटर है, ठीक है, यूजुअली टेकन बिटवीन 0 to 1। तो अल्फा जो होगा वो होगा 0 থেকে 1 में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। समटाइम्स अल्फा इज चूजन सच दैट one of wi is of this method is 0. So sometimes alpha is chosen in between, so that in between 0 and 1, so that any one of W1 or W2 may be 0, okay. Now the most important thing is there are three cases or three methods depending upon the value of alpha from 0 to 1, okay. I will just remove this. Now case 1, okay, case 1, if alpha equal to half, okay, if alpha equal to half, then we put the value of alpha here. देखो क्या आता है, then आएगा yi plus 1 this is equal to yi plus alpha equal to half होगा तो क्या होगा yi plus w1 k1 plus w2 k2. This makes, and if alpha equal to half, then I write here अल्फा इक्वल टू हाफ, तो W1 क्या था, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ कि W1 प्लस W2 इक्वल टू 1 एंड इसका सॉल्यूशन क्या लिखा था मैंने, अल्फा इक्वल टू बीटा, W2 इक्वल टू 1 by 2 alpha and W1 equal to 1 minus 1 by 2 alpha. So if we choose W alpha equal to half, then from this equation you see there W1 equal to 0, okay. So this makes W1 equal to 0. Then the method comes yi plus 1 equal to yi plus simply W2 k2, okay, W2 k2, or W2 equal to value is alpha equal to half means W2 equal to here 1, so this gives W2 is equal to 1, so we can erase W2. So this is the method, and k1 equal to what, k1 equal to h f of xi yi, and k2 equal to h f of xi plus h by 2 yi plus h by 2, okay. So this method is known as case 1, this method is known as Euler's method. Euler's method with spacing h by 2, okay, and it is also called the modified Euler-Cauchy method. एक और भी नाम है जिसका नाम है modified Euler-Cauchy, modified Euler-Cauchy method. This reduces to midpoint quadrature formula when fxy is independent of y. So here also this method is midpoint
quadrature formula when f is independent of y। देखो तो चीज क्या है, देखो कहां से कहां क्या क्या आ रहा है। देखो आर के मेथड से शुरू किया, देन स्टार्ट किया, देन क्या आया, ऑयलर्स मेथड आ गया, मॉडिफाइड ऑयलर कॉची मेथड आ गया, मिड पॉइंट क्वाड्रेचर फॉर्मूला आ गया इफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। तो अच्छे से, बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि गेट में यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, 110% श्योर क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। देन इफ अल्फा इक्वल टू 1, ये तो केस 1 हो गया। देन केस 2, देखो अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू हाफ, अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ से W2 का वैल्यू क्या आएगा, W2 का वैल्यू आएगा 1/2, W1 का वैल्यू आएगा ये भी 1/2। तो देखो W2 एंड W1 का वैल्यू आ गया हाफ एंड हाफ। देन द मेथड क्या आएगा, मतलब ये वाला, ये आएगा yi प्लस 1, दिस इज इक्वल टू yi प्लस हाफ इंटू k1 प्लस k2 एंड k1 इक्वल टू क्या आएगा, h f ऑफ xi yi एंड k2 इक्वल टू आएगा h f ऑफ xi प्लस h yi प्लस k1। देखो एंड ये मेथड क्या है, इसको देख के आपको क्या इसका याद आ रहा है, ये ट्रापेजॉइडल रूल नहीं है। ओके तो देखो क्या से स्टार्ट किया था, आर के मेथड से स्टार्ट किया, क्या क्या मेथड आ रहा है, मतलब दिस इज द जनरल मेथड, जनरल सेकेंड ऑर्डर मेथड। जो सेकेंड ऑर्डर मेथड हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि ट्रापेजॉइडल हो गया, आपका ऑयलर्स हो गया, ये सब जो मेथड्स आया कहाँ से आ रहा है, देखो एक जनरल मेथड से, जो कि है सेकेंड ऑर्डर रंगे-कुट्टा मेथड से, ठीक है। नाउ एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ऑयलर्स कॉची और ह्यून्स मेथड, इसको कहते हैं ह्यून्स मेथड ऑल्सो, ठीक है, इसको कहते हैं ह्यून्स मेथड ऑल्सो। नाउ वन मोर थिंग इज दैट, सो ये तो आया केस 3, केस 3 अल्फा का वैल्यू 2/3 होगा। तो यही तीनों केस मेनली सेकेंड ऑर्डर का केस में आता है। जो जितना ज्यादा सेकेंड ऑर्डर केस है ना सेकेंड ऑर्डर मेथड से, वो सभी इसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 2/3 होगा तो क्या होगा, देखो अल्फा इक्वल टू 2/3 होगा तो यहाँ से W2 एंड W1 आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो W2 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 इंटू 2/3, दैट मीन्स ये आएगा 3/3/4 एंड W1 क्या आएगा, W1 आएगा आपका आई थिंक 1/4, W1 प्लस W2 1 होता है तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो जो मेथड्स आएगा वो क्या आएगा, yi प्लस 1 इक्वल टू, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है यहाँ पर, yi प्लस 1/4 इंटू k1 प्लस 3k2, ठीक है। एंड k1 का वैल्यू क्या आएगा, k1 वैल्यू आएगा h f ऑफ xi yi एंड k2 इक्वल टू आएगा h f ऑफ xi प्लस 2/3 h एंड yi प्लस 2/3 k1. So these are the three cases, okay, and this method is gives you the optimal solution and इसका बेस्ड CSIR में रिसेंट एक ईयर में क्वेश्चन आया था। यहाँ पर ऐसा कुछ दिया था 3-4 ऑप्शंस एंड बोला था कि which of the following RK-2 और सेकेंड ऑर्डर मेथड्स gives you the optimal solution for this differential equation. So you see this method, you have to identify that method from to see this. So yi plus 1 equal to yi plus 1/4 k1 plus 3k2। तो देखो मैंने आपको क्या बोल रहा था कि यहाँ से तीनों के तीनों मेथड आ रहा है। देखो यहाँ से एक मेथड है, ये भी एक RK-2 मेथड है, एक दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। सो देयर आर टोटल 3 methods, second order methods. From these methods you can calculate or you can find the you can solve the numerical differential equations or initial value problem questions, okay. And from this formula, from this 3 formula, this case 3 alpha equal to 2/3, that is this formula gives you the optimal solution, and
you see the questions regarding these very common questions asked in the CSIR net paper or GATE paper also. Okay, so these concepts is very helpful. You have to just identify this formula and you have to just say what is the solution. So see, and we in CSIR net we apply this trick, W1 plus W2 equal to 1 and alpha W2 equal to half and beta W2 equal to half. Beta W2 equal to half. From where these concepts comes, I'll teach you. I already teach you that from where these concepts come. So this is the general formula. Applying Taylor series method, we have a system and the solution of the system is this one. The system is what? I'll just write once. The system we get W1 plus W2 equal to 1 and alpha W2 equal to half and beta W2 equal to half. This is a system. But the solution of the system is what? Alpha equal to beta, W2 equal to 1 by alpha, W1 equal to 1 minus 1 by alpha. We just check this thing to solve the CSIR net problems. But in this case, what is the accuracy of the question? You just think that this is only the system. Okay, but what is the solution of the system? So based on this value of alpha, we get 3 solutions of the system. And there are 3 types of second order methods comes in the situations. Okay, and based on these 3 types of formula, you can get 3 types of questions, or you have to ask any one of these. Okay, whether you have to mention the name of this formula, otherwise you don't have the name of the formula is not mentioned in the questions. But these types of questions मैंने आपको कैसे बोलूँ कि ऐसे जो क्वेश्चंस होता है जब आपको पूछेगा कि कौन सा जो है फॉर्मूला से आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये आप अप्लाई करोगे, ठीक है। एंड और 2 मेथड्स है जो कि ट्रापेजॉइडल है, देन यहाँ से जो रिड्यूस होके आ रहा है ऑयलर्स मेथड विथ स्पेसिंग टू मिड पॉइंट क्वाड्रेचर फॉर्मूला इफ fxy is independent of y. So these are the cases or these are the theory behind this. I think you will not understand this concept very easily, but when you see the questions from the second order method, obviously watch this video 1 times, I think you will definitely get these types of questions or these types of you have to solve, or you definitely solve these types of questions in the exam paper. Today I am not taking any example, but I think one video is necessary for you to understand these topics or to understand this concept through examples. So in the previous video I will take 2 or 3 examples to elaborate these types of video. Okay, these types of these three types of concept. Now one more thing is remaining, which is also I want to say here, which is that सेकेंड ऑर्डर मेथड्स का एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, जो कैसे आप याद रखोगे। सेकेंड ऑर्डर मेथड, ठीक है, ऐसे आप लिखोगे। ये तो यही यहाँ पर लिखा है अल्फा वाई आई प्लस बीटा के 1। तो देखो ऐसा कुछ तरीका है, अल्फा एंड बीटा एंड W1 एंड W2। कैसे याद रखोगे ये कोएफिशिएंट्स को, ठीक है। तो फर्स्ट जो है नंबर 1 1 1 हाफ हाफ, तो इसका वैल्यू मतलब क्या है, अल्फा 1 का वैल्यू 1, अल्फा 2 मतलब बीटा का वैल्यू 1, W1 का वैल्यू हाफ, W2 का वैल्यू हाफ। इन दिस केस यू विल गेट ऑयलर कॉची मेथड। or Hume's method. This reduces to then half half, मतलब अल्फा एंड बीटा वैल्यू हाफ हाफ, W1 0, W2 is 1. Then this case is modified Euler-Cauchy. And the third and the optimal solution is 2/3
1 4 1 4, that is alpha value is half, beta value 2/3, beta 2/3, w1 1/4, w2 1/4, and this will gives you the optimal solution of second order method. Okay, so you definitely comment whether you will understand or not this video or these concepts. Okay, so thank you, and next we will meet in another video. Okay, chalo, bye and Hare Krishna.